जिनके आदेश पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 2 ऑयल टैंकरों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक से तेल टैंकर मैरिनेरा को जब्त किया तो कैरेबियन सी में सोफिया नाम के ऑयल टैंकर को दबोचा है। लेकिन रूस का गुस्सा ऑयल टैंकर मैरिनेरा को लेकर है, क्योंकि इस पर रूस का फ्लैग लगा था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी फौज ने इसे जब्त कर लिया। अमेरिका ने जिस रूसी ऑयल टैंकर को पकड़ा है, पहले इसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाल दिया था। दिसंबर 2025 में यह वेनेजुएला की ओर जा रहा था, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की। तब यह जहाज अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देकर भाग निकला था। तब यह ऑयल टैंकर गुआना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदलकर मैरिनेरा कर दिया गया था और इस पर रूसी झंडा लगाकर इसे ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order in the crew. So that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law. And they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. इस ऑयल टैंकर पर अमेरिका की पहले से नजर थी। इसे पकड़ने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने लॉन्च पैड के रूप में अपनी जमीन मुहैया कराई। टैंकर पर कब्जा करने के मिशन के लिए ब्रिटिश हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया गया। जब रूस ऑयल टैंकर मैरिनेरा आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच से नॉर्थ अटलांटिक सागर से गुजर रहा था, तब रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमानों ने लगातार इसकी गतिविधियों पर नजर रखी और अमेरिकी सेना को सटीक जानकारी साझा की, जिसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने ब्रिटिश की मदद से मैरिनेरा को जब्त किया। ब्रिटेन का कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद इस ऑयल के टैंकर से ईरान के ऑयल को ढोया जा रहा था। Today, the US conducted a military operation to intercept the motor vessel Bella 1 in the North Atlantic on its way to Russia. The UK, at the request of the US, supported this operation as part of global efforts to crack down on sanctions busting and shadow shipping activity. The Bella 1 was falsely flagged. It was falsely flagged and subject to US counter-Iran sanctions. This is a sanctioned, stateless vessel which carries a long history of nefarious activity and shares close links with both Iran and Russia. Following a request from the US, I authorised the use of UK bases and the deployment of Royal Navy and RAF assets to support the operation, including airborne surveillance and the RFA ship Tide Force. This was a US operation. No UK personnel took part in the boarding. But the Bella 1 is now under the control of US forces who demonstrated immense courage and professionalism in dangerous and deteriorating Atlantic Sea conditions.